Today we are learn to difference between FIFO and LIFO method. The following are the main points of difference between FIFO and LIFO method of stock taking. तो आज हम इस लेक्चर में FIFO एंड LIFO मेथड का डिफरेंस देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन यानी कि समझूती। फर्स्ट FIFO and second LIFO. According to this method, material are issued in the order in which they are purchased. Material purchased first are issued first, and then on completion of the material of first lot, it will be issued from the second lot, and so on. The pricing of material issued is done on this assumption is this method. यानी कि आ पद्धति अनुसार प्रथम खरीदेल माल प्रथम पूरो पाडवामां आवे छे। એટલે કે જે ક્રમમાં માલની ખરીદી કરવામાં આવી હોય તે ક્રમમાં માલ પૂરો પાડવામાં આવે છે તેમ માનવામાં આવે ને તે અનુસાર જાવક કિંમત નોંધાય છે. LIFO method. According to this method, material are issued in order of last purchase. Material purchased last are issued first. Material are issued from the last purchase, and on its completion will be issued from last but one purchase, and so on. And the pricing of material issued is done on this assumption in this method. આ પદ્ધતિ અનુસાર છેલ્લા ખરીદવામાં આવેલ માલના જથ્થામાંથી પ્રથમ માલ પૂરો પાડવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી તેના પહેલાંના જથ્થામાંથી માલ પૂરો પાડવામાં આવે છે તેમ માનવામાં આવે છે અને તે મુજબ જાવક કિંમત નોંધાય છે. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક value of closing stock. According to this method, the value of closing stock will be near to the current market price, as the value of stock is based on the price of latest purchase. As such, balance sheet show true and fair view of the state of affair of the business. આ પદ્ધતિ અનુસાર છેવટના સ્ટોકની કિંમત એટલે કે આખર સ્ટોકની કિંમત બજાર કિંમતની નજીક હોય કે તેને મળતી આવે તેથી પાકું સરવૈયું હોય ધંધાની સાચી આર્થિક પરિસ્થિતિ બતાવે છે. અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ મેથડ ધ વેલ્યુ ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક વિલ બી ઓન ધ બેસિસ ઓફ ઓલ્ડ પરચેસ એન્ડ એઝ સચ નોટ નિયર ધ કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ, બટ ઇટ વિલ બી ડિફરન્ટ ફ્રોમ the current market price. The balance sheet does not show true and fair view of statement of affairs of the business. यानी कि આ પદ્ધતિ અનુસાર આખર સ્ટોકની કિંમત તેની જૂની ખરીદી પ્રમાણેની હોય છે એટલે તે બજાર કિંમત કરતાં જુદી પડે છે. પરિણામે પાકું સરવૈયું ધંધાની સાચી આર્થિક પરિસ્થિતિ રજૂ કરી શકતું નથી. એના પછી નેક્સ્ટ ડિફરન્સ ઇન કોસ્ટ यानी कि પડતરમાં તફાવત. અંડર ધીસ મેથડ when prices of material are raising, the issue price is calculated on the base of old purchase price, which is very less than current market price. Thus, the cost of production will be less, and so it is not retailable for flexible selling price. यानी कि જ્યારે ભાવો વધી રહ્યા હોય ત્યારે અગાઉની ખરીદીના ભાવે જાવક કિંમત નોંધવામાં આવે છે જે હાલના ભાવ કરતાં ઘણી ઓછી હોય છે. આમ પડતર કિંમત ઓછી હોય અને નફો વધુ મળે છે. LIFO method. Under this method, when price of material are raising, the
material are charged at latest price being price of latest purchase and such cost of production reflection current market price and it more reliable for flexible selling price. यानी कि જ્યારે ભાવો વધી રહ્યા હોય ત્યારે પૂરા પાડેલ માલની કિંમત આખરી ખરીદીના ભાવે ગણી હોવાથી નજીકની હોય છે. તેથી પડતર કિંમત બજાર કિંમતને મળતી આવે છે. એના પછી પોપ્યુલારિટી એટલે કે પ્રચલિતતા. ધીસ મેથડ ઇઝ વેરી પોપ્યુલર એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ કમિટી હેઝ રિકમેન્ડેડ ઇટ ફોર વેલ્યુએશન ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. તો કે આ પદ્ધતિ ઘણી પ્રચલિત છે અને ઇન્ટરનેશનલ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ કમિટીએ તેને માન્યતા પણ આપેલી છે. This method is less popular and International Accounting Standard Committee has not recommended it for valuing closing stock. તો કે આ પદ્ધતિ એટલે કે લીફો પદ્ધતિ બહુ ઓછી પ્રચલિત છે અને ઇન્ટરનેશનલ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ કમિટીએ તેને અમુક શરતોએ જ માન્ય રાખી છે. એના પછી નેક્સ્ટ યુટિલિટી એટલે કે ઉપયોગિતા, ઇમ્પોર્ટન્સ, યુટિલિટી. ધીસ મેથડ ઇઝ યુઝફુલ ફોર પેરિસેબલ કોમોડિટીઝ. યાની કે આ પદ્ધતિ નાશવંત કે જલ્દી બગડી જાય એવી વસ્તુઓનું ખરીદ વેચાણ કરતી પેઢી માટે ઉપયોગી છે. ધીસ મેથડ ઇઝ નોટ યુઝફુલ ફોર ફર્મ ડીલાઇંગ ઇન પેરિસેબલ આઇટમ. યાની કે આ પદ્ધતિ નાશવંત કે બગડી જાય એવી વસ્તુઓનું ખરીદ વેચાણ કરતી પેઢીઓ માટે બિનઉપયોગી હોય છે. સો આજે इस लेक्चर में आपने FIFO एंड LIFO मेथड का डिफरेंस देखा. अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में देखते हैं. अब नेक्स्ट मेथड वेटेड एवरेज मेथड. In order to eliminate the effect of price fluctuation and average price method is used. The assumption is that one, the goods are purchased and are received in stores. They lose their identity. There are two types of average wise, sample average and weighted average method. यानी कि ભાવમાં વારંવાર થતી વધઘટની અસર દૂર કરવા માટે સરેરાશ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય. આવી અનેક પ્રકારની સરેરાશ જેવી કે સાદી સરેરાશ, ભારિત સરેરાશ, સામયિક સરેરાશ કે ચલિત સરેરાશનો ઉપયોગ થાય છે. એમાંથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવરેજ ટાઈપ છે સિમ્પલ એવરેજ અને વેટેડ એવરેજ મેથડ. તો ફર્સ્ટ, simple average is the average of price at which various lots of material are purchased without taking into account the quantity purchased. Example, one lot of 200 kg material A is purchased at rupees 50 per kg and 60 kg are purchased at rupees 60 per kg. यानी कि જો જુદા જુદા સમયે ખરીદેલ માલની સરેરાશ શોધતી વખતે ખરીદીનો જથ્થો ધ્યાનમાં ન લેવામાં આવે તો તેને સાદી સરેરાશ એટલે કે સિમ્પલ એવરેજ મેથડ કહે છે. દાખલા તરીકે કે 200 કિલો માલ ₹15ના ભાવે અને 600 કિલો માલ 16ના ભાવે ખરીદ્યો. ધેન ધ સિમ્પલ એવરેજ વિલ બી 15 + 16 = 31 / 2 is equal to 15.50 rupees per kg. This simple average is obtained by editing up pricing and dividing the total by the number of prices. So added, this method is effective as the ignore the quantities purchased in each lot. Secondly, as the prices
charged are not at actual cost, the profit or loss may arise in store ledger account. यानी कि સિમ્પલ એવરેજ મેથડમાં પ્રાઇસ એડિટિંગ કરવામાં આવે ને ડિવાઇડિંગ કરીને ટોટલ નંબર મળે છે અને એનાથી જે ક્વોન્ટિટી પરચેઝ હોય એને આપણે ઇગ્નોર કરી શકતા નથી. બીજું કે પ્રાઇસ ચાર્જ આર નોટ એકચ્યુઅલ, એટલે કે એની કોઈ ચાર્જ એકચ્યુઅલ હોતો નથી. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અરાઇઝ ધ સ્ટોર લેઝર અકાઉન્ટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ દર્શાવે છે. એના પછી સેકન્ડ મેથડ વેઇટેડ એવરેજ મેથડ. તો વેઇટેડ એવરેજ મેથડ ઇઝ more practical as it given due weighted to the quantity purchased. ભારિત સરેરાશ પદ્ધતિમાં ખરીદેલના જથ્થાને મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે અને સાદી સરેરાશ પદ્ધતિની ખામીને દૂર કરવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ ઓબ્ટેન્ડ બાય ડિવાઇડિંગ ધ ટોટલ વેલ્યુ ઓફ સ્ટોક બાય ટોટલ ક્વોન્ટિટી. Average will have to be calculated afresh every time fresh supply arrive. The formula used will be sigma wx divided by sigma w, where w is equal to weight and x is equal to price. Suppose 200 kgs are purchased on 5th February 2008 at ₹50 per kg and 600 kgs on 8th February 2008 at ₹16 per kg, then the weighted average price will be calculated as under 200 multiply 15 plus 600 multiply 16 divided by 200 plus 600. Is equal to 300 plus 900 3000 plus 900 600 divided by 800 is equal to 15.75. This can be calculated with the help of another formula which is under. यानी कि ये हमारी फर्स्ट फॉर्मूला थी. अब हम दूसरी फॉर्मूला देखते हैं. वेटेड एवरेज इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2, वेर Q1 इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट परचेज, Q2 इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सेकंड परचेज, P1 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ फर्स्ट परचेज, P2 is equal to price of second purchase. If we use the above figures, P1 15 and P2 16, Q1 200 and Q2 16, 15 multiply 200, 16 multiply 600 डिवाइड बाई 200 प्लस 600, यानी कि 15.75 हमको मिलेगा. तो ये दोनों फॉर्मूला है वेटेड एवरेज मेथड की. तो हम ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस. As both the quantity and value are taken into consideration, the value of good issued will be reasonable. यानी कि मालना जत्थो અને કિંમત બંનેની ગણતરી વખતે ધ્યાનમાં લેવાતા હોવાથી માલની કિંમત વ્યાજબી આવે છે. નેક્સ્ટ, if there are wide or frequent fluctuation in price, then its effect will be reduced under this method because average price reduce the effect of difference in price. સેકન્ડ એડવાન્ટેજીસ કે જો ભાવમાં વધુ પ્રમાણમાં વધઘટ થતી હોય તો આ પદ્ધતિ મુજબ તેની અસર ઓછી થાય
છે, કારણ કે સરેરાશ કિંમતમાં ભાવ તફાવતની અસર ઘટે છે. એના પછી નેક્સ્ટ, under LIFO and FIFO method in this same issue, certain goods are changed at one price and certain other goods are charged at different prices, whereas in weighted average method the same issue of goods are priced at one price only. यानी कि ફીફો અને લીફો પદ્ધતિમાં એક જ વખતની જ આવકમાં અમુક માલ એક ભાવે અને અમુક માલ બીજા ભાવે નોંધાય એવું બને છે, જ્યારે ભારિત સરેરાશ પદ્ધતિમાં એક વખતના માલની જ આવક એક જ ભાવે નોંધાય છે. ફોર્થ, this method is also approved by International Accounting Standard Committee. यानी कि ઇન્ટરનેશનલ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ કમિટી આ પદ્ધતિ માન્ય રાખેલ છે. એના પછી નેક્સ્ટ, disadvantages. If there are frequent purchases, then this method is not usually adopted because it involves calculation of average at each purchase of goods. Thus, the work of calculation of average increase and large number of calculation are involved. यानी कि વારંવાર ખરીદી કરવામાં આવે ત્યારે આ પદ્ધતિ યોગ્ય નથી, કારણ કે વારંવાર સરેરાશ કાઢવાની હોવાથી ગણતરી કામ ખૂબ વધી જાય છે. तो ये हमने देखा वेटेड एवरेज मेथड, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. अब हम वेटेड एवरेज मेथड का एक एग्जाम्पल देखते हैं. तो આપણે જોઈએ वेटेड एवरेज मेथड का एग्जाम्पल. तो उसका कोष्टक हम सबसे पहले देख लेते हैं. स्टेटमेंट, स्टॉक रजिस्टर अंडर वेटेड एवरेज मेथड. ये फीफो लीफो दोनों और वेटेड एवरेज तीनों में एक जैसा ही स्टेटमेंट होगा. स्टॉक रजिस्टर. तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल. The following is the receipt and issue of certain material in a factory for quarter ending on 31st March 2011. January 2011, first opening balance 200 kgs at rupees 2 per kg. January 4, issued 100 kg. February 1, purchased 300 kg at rupees 250 per kg. February 6, issued 200 kg. February 28, issued 100 kg. March 4, purchased 200 kg at rupees 3 per kg. March 16, issued 150 kg. From the above mentioned information, you are required to prepare stock register assuming that issues are priced on weighted average method and find out the value of closing stock on 31st March 2011. तो अब हम एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल. तो फर्स्ट हम डेट लिख देते हैं. तो क्या डेट थी हमारी? सबसे पहले डेट में ईयर लिखेंगे 2011 जनवरी 1. उसमें इनवॉइस बैलेंस नहीं है पर बैलेंस क्या था? ओपनिंग बैलेंस 200 kg. तो हमारी क्वांटिटी हुई 200. रेट कितना था? 2 पर kg. तो 200 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 400. उस डेट को हमारा इश्यू मटेरियल हुआ नहीं था तो उसमें डैश. उसके बाद बैलेंस बचा 200, रेट 2 और अमाउंट 400. जो था वही का वही बैलेंस यहाँ पे बचा.
अब हम देखते हैं उसके नेक्स्ट डेट को। जनवरी 4 इश्यूड 100 kg। तो चलो डेट मिली हमें 4, उसमें परचेज नहीं किया तो रिसिप्ट में डैश, इश्यू किया है बट इनवॉइस नंबर नहीं है तो उसमें भी डैश, क्वांटिटी 100 kg, तो 100 kg। तो 100 kg में बैलेंस था हमारा 200 kg, उसका रेट था 2, तो उसमें से हम 100 kg इश्यू करेंगे तो उसका भी रेट होगा 2, तो 100 × 2 यानी कि 200। अब हमारे पास बैलेंस बचा 200 का, 200 kg का स्टॉक था, उसमें से 100 kg इश्यू हो गई, तो हमारे पास बचा 100 kg। उसका स्टॉक था, सॉरी इसका रेट था 2, तो अमाउंट मिलेगी 200 रुपीज़। उसके बाद February 1 परचेज्ड 300 kg एट ₹2.50 पर kg। तो अब देखते हैं February 1 इनवॉइस नंबर नहीं है, क्वांटिटी है 300 kg, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी में लिख देते हैं 300 kg। उसका रेट है 2.50, 300 kg मल्टीप्लाई 2.50, तो हमें मिलेगा 750। फिर से देखते हैं कि February 1 को परचेज़ किया 300 kg, रेट है 2.50, तो क्वांटिटी 300, रेट 2.50, तो अमाउंट हुई 750। उस दिन इश्यू हुआ नहीं था तो इश्यू में डैश। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पुराना स्टॉक था 100 और नया आया 300, तो टोटल हुआ 400। अब हम यहाँ की रेट सोचते हैं। तो ये रेट फाइंड करने के लिए हमारी फॉर्मूला थी P1 Q1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2। तो अब हम देखते हैं कि P1 फर्स्ट खरीदी का रेट, तो फर्स्ट खरीदी का परचेज का रेट 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट क्वांटिटी 100 प्लस P2 यानी कि सेकंड प्राइस 2.50 मल्टीप्लाई सेकंड क्वांटिटी 300 डिवाइड बाय Q1 100 प्लस Q2 300। आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो सेकंड मेथड कि P1 Q1, तो यहाँ रहा P1 और Q1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 200 हमने कर दिया, तो ये हमारा 200 प्लस P2 Q2, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी ये रहा 750 डिवाइड बाय Q1 Q2, तो ये रहा दोनों Q1 प्लस Q2 400, तो हमको मिलेगा 2.375। तो अब हमारा नया रेट आया 2.375, तो 400 मल्टीप्लाई 2.375, तो हमको मिलेगा 950। जब आप मटेरियल परचेज करेंगे तब यहाँ का रेट चेंज होगा। तो हमने मटेरियल परचेज किया तो यहाँ का रेट चेंज हुआ 200 प्लस 750 डिवाइड बाई 400, तो हमको मिला 2.375। अब हम नेक्स्ट देखते हैं February 6 इश्यूड 200 kg। तो February 6 इश्यू किया है तो रिसिप्ट में डैश होगा, इनवॉइस नंबर में भी डैश होगा, और इश्यू में क्वांटिटी में होगा 200 kg, तो यहाँ पे लिख देते हैं 200 kg। तो अब 200 kg का रेट यहाँ पे होगा 2.375, तो 200 मल्टीप्लाई 2.375
यानी कि 475। हमारे पास बैलेंस था 400, उसमें से 200 लेस यानी कि इश्यू कर दिया, तो हमारे पास अब बैलेंस बचा 200 और उसका रेट भी यही 2.375। तो 200 मल्टीप्लाई 2.375 यानी कि 475। अब नेक्स्ट February 28 इश्यूड 100 क्वीजीज। तो अब डेट हुई February 28, उस दिन भी हमने परचेज नहीं किया तो रिसिप्ट में डैश, इनवॉइस नंबर में भी डैश, क्वांटिटी हमारी है 100 केजीज, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 केजीज। उसका रेट भी यही का होगा, यहाँ पे जो रेट होगा वो भी यही का 2.375। तो 100 मल्टीप्लाई 2.375 तो 237.5। अब हमारे पास बचा 200 था मटेरियल, उसमें से 100 लेस हो गया तो बचा 100, उसका रेट यही 2.375। तो 237.5। अब नेक्स्ट, अब March 4 को परचेज किया है, परचेज 200 kg एट ₹3 पर kg। तो चलो लिखते हैं March 4 उस दिन परचेज किया पर इनवॉइस नंबर नहीं है, तो क्वांटिटी है 200 kg, ये रही, तो क्वांटिटी 200 और रेट 3 पर kg, तो रेट 3, 200 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 600। उस दिन कोई इश्यू हुआ नहीं था, बट क्या किया हमने, परचेज़ किया तो यहाँ का रेट चेंज होगा, तो हमारे पास पुराना बैलेंस कितना था 100 और नई खरीदी की 200, तो टोटल अब स्टॉक हुआ 300 का। तो अब हम फिर से रेट कैलकुलेट करते हैं, तो 237.5 प्लस 600 डिवाइड बाय ये रहा 300, तो अब हमको मिलेगा 2.79 एप्रोक्स हमको यहाँ पे मिलता है 2.79। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.79। तो 300 मल्टीप्लाई 2.79 यानी कि 837.50। अब नेक्स्ट, March 16 को इश्यूड किया 150 kg। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं March 16 इश्यू किया है, इसीलिए रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा और इनवॉइस नंबर भी नहीं है, तो उसमें भी डैश, क्वांटिटी कितनी है 150 रही, तो 150, उसका रेट क्या लगेगा, ये रहा ये 2.79। तो 50 मल्टीप्लाई 2.79 यानी कि 418.75। तो अब हमारे पास बैलेंस था 300 kg, उसमें से हमने इश्यू कर दिया 150 kg, तो हमारे पास बचा 150 kg, उसका रेट यही सेम 2.79। तो 150 मल्टीप्लाई 2.79 यानी कि 418.75। तो ये हमारा हो गया। फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, वेटेड एवरेज मेथड, जब परचेज होगा, वेटेड एवरेज मेथड में जब परचेज होगा तब यहाँ का रेट यानी कि बैलेंस का रेट, स्टॉक का रेट चेंज होगा। तो फर्स्ट हमारे पास बाकी बैलेंस थी, तो वो भी बैलेंस में आ गई, इश्यू नहीं हुआ, तो उसके बाद हमने इश्यू किया 100 kg, तो वो 100 kg 200 था, तो 100 kg इश्यू हुआ, तो हमारे पास 100 kg बचे। उसके बाद हमने परचेज़ किया इसीलिए हमारे पास स्टॉक बचा, पुराना 100 और नया 300, तो 400 स्टॉक बचा और उसका कैलकुलेशन किया
200 प्लस 750 डिवाइड बाय 400, तो हमको मिला 2.375। तो 400 मल्टीप्लाई 2.375 इज इक्वल टू 950। उसके बाद 6 को हमने फिर से इश्यू किया, तो उसमें रेट चेंज नहीं होगा, वही रेट लगेगा। फिर से 28 को इश्यू किया 100 kg, तो उसमें भी रेट चेंज नहीं होगा। उसके बाद फिर से हमने मार्च 4 को हमने परचेज़ किया, तो परचेज़ किया है तो फिर से हमारा रेट चेंज होगा। तो हमारे पास पुराना रेट था 2.375 और नया रेट था 3। पुराना स्टॉक था 100 और नया 200, नया स्टॉक बैलेंस में हुआ 300। तो 237.5 प्लस 600 डिवाइड बाई 300, तो हमको मिलेगा 2.79 अप्रोक्स। तो 300 मल्टीप्लाई 2.79 इज इक्वल टू 837.50। उसके बाद 16 को हमने फिर से 150 का स्टॉक इश्यू किया, तो अब हमारे पास बचा 150 का स्टॉक। अब लिफो और फीफो मेथड के जैसे ही क्वांटिटी का टोटल करेंगे और अमाउंट का टोटल, फिर से क्वांटिटी का, फिर से अमाउंट का, और रिसिप्ट में से इश्यू लेस करेंगे तो हमको बैलेंस मिल जाएगा। तो हम करते हैं 200 प्लस 300 500, 6 में 700, उसके बाद 400 600 750 यानी कि 1750। यहाँ पे 100 200 प्लस 100 400 550, और यहाँ पे 200 प्लस, तो उसका टोटल हुआ 1331.25। अब 700 में से 550 लेस होगा तो हमको मिलेगा 150। अब 1750 में से 1331 लेस होगा तो हमको मिलेगा 418.75। तो ये दोनों लास्ट की बैलेंस की अमाउंट की तरफ से मिलती है, दोनों सेम है, तो ये हमारा एग्जाम्पल सही है, उसमें कोई क्वेरी नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट तीनों मेथड हमने देख लिए, तो अब हम और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आपका पूरा का पूरा सम आप देख लीजिए।